हाय गाइस, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में। हमारे पास दो बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, गेट एंड आईआईटी जैम इन 10 डेज। दोनों एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हैं और 180 मिनट्स दैट इज़ 3 आवर्स के हैं। क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे और मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे। This is the second video of the series where I discuss past year question papers, some tricks, tips, the errors I committed during my preparation. मैं इन वीडियोस में मोस्टली स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ ताकि आपके स्टैटिस्टिक्स में डाउट्स बहुत क्लियर हों। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर x एक रैंडम वेरिएबल है विद द फॉलोइंग PDF. एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू 20 एंड वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 10. अब हमें फाइंड करना है अल्फा एंड p. तो x बिलोंग करता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर अल्फा एंड p. जब भी हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा बाई p एंड वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा बाई p स्क्वायर. अगर ये वन पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता तो एक्सपेक्टेशन इक्वल्स टू वेरिएंस आता. When we talk about discrete distributions, mean is equal to variance in Poisson distribution, and when we talk about continuous distributions, mean is equal to variance in gamma distribution. हम सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला पुट करेंगे और इक्वेट कर देंगे. तो एग्जाम सेंटर में आपको वो एक शीट देंगे फॉर रफ वर्क विच हैज़ टू बी सबमिटेड लेटर ऑन. Sometimes they will tell you we will give you only one sheet and they might not even tell you. So अगर आपकी handwriting बड़ी है then please take care. Let's look at the next question. X एक random variable है और इसका distribution function given है. We have to find probability x equals to 0, x equals to 1 by 2, x equals to 2 and x greater than equal to 1. Remember, if this had been a continuous distribution, then the probability of x at discrete points will be 0. But this is not a continuous distribution. So हम सबसे पहले probability x equals to 0, फिर हम probability x equals to 1.5 फाइंड करेंगे. ऐसे ही हम सारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज फाइंड करेंगे. And the desired solution is 1 by 4 plus 1 by 4 plus 3 by 8, which is equal to 7 by 8. Let's look at question number 7. We have been given 3 IIT uniform 0,1 random variables and we have to find expectation x1 plus x2 upon x1 plus x2 plus x3. ये क्वेश्चन बुक की इस प्रॉपर्टी का यूज है. Now we can simply put expectation of x1 equals to expectation of x2 since they are identical variables.
and from there we get the desired answer. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 5 सैम्पल वैल्यूज़ हैं, ओके, एंड हमें हर एक वैल्यू का PMF गिवन है। हमें फाइंड करना है थीटा का MLE और ये हमारे गिवन ऑप्शंस हैं। ओके, सो जब भी हमें MLE फाइंड करना होता है हम सबसे पहले जॉइंट PDF ऑफ n सैम्पल वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, राइट। सो यहाँ पर n इज़ 5, तो हमारे पास 5 डिफरेंट सैम्पल वैल्यूज़ होंगी। अब हमें क्या रखना है, अब हमें सिर्फ उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो हमारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन है। एज यूजुअल लॉग लाइक्लीहुड फाइंड करेंगे। लॉग इज़ अ मोनोटोनिक फंक्शन, सो अगर हम लॉग लाइक्लीहुड मैक्सिमाइज करेंगे देन वी आर एबल टू मैक्सिमाइज आवर लाइक्लीहुड फंक्शन। नॉर्मल इक्वेशन निकालने के बाद हम थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें MGF दिए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का MGF बन सकता है, तो हम उसे एक फॉर्मेट में लाने का ट्राई करेंगे। तो अब हमें दो अलग अलग MGF मिलते हैं। x1 belongs to binomial with parameter 2 and 3/4 and x2 belongs to binomial with parameter 3 and 1/4. So we know that when two parameters are independent, the MGF of their sum is simply the multiplication of their individual MGFs. In this following question, हमें given है xn फॉलो करता है chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और हमें ये लिमिट फाइंड करना है। अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मेट में सेम क्वेश्चन 2005 में भी आया है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। हमारे पास xn का एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हम हमेशा उसे स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करेंगे। सो अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैव डाउट्स कि अगर उनका कीबोर्ड काम नहीं किया, जैसे SSC CGL में हुआ या एनी अदर डाउट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सी, व्हेन यू आर सॉल्विंग योर पेपर
you don't really need a keyboard, right? It's not a written paper. So don't worry if your keyboard will be working or not. As long as your mouse is working, it's fine. And your system is working, of course. So हमें x एक Poisson random variable given है and lambda is equal to 1/2. Remember, lambda can never be equal to 0 and we have to find expectation x plus 1 factorial. So we will simply take expectation x plus 1 factorial is equal to summation x plus 1 factorial into PDF of x. Then we will expand it. We will take e to the power minus 1/2 outside. And we know 1 plus 2a plus 3a square plus 4a cube and so on is equal to 1 upon 1 minus a. In the next question हमें x एक standard normal variate given है और एक cubic polynomial given है. हमें find करना है x cube minus 2x square minus x plus 2 greater than 0. Right? हम सबसे पहले इस polynomial के roots find करते हैं. तो इस पॉलिनोमियल के रूट्स हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0. तो x विल बी आइदर फ्रॉम माइनस 1 to 1 और x विल बी ग्रेटर देन 0, राइट. नाउ x विल बी आइदर फ्रॉम माइनस 1 to 1 और ग्रेटर देन 2. So now all it remains is to find the probabilities. Remember, x is already a standard normal variate. Also, you will be provided a timer on the screen so that you don't have to look at your watch again and again. Now, we have been given the joint PDF and the ranges of x and y. So, questions like finding expectation of y given x equals to something are very common. Okay. Here, let's try finding the probability y given x equals to 1/2 first. So, we already have the joint distribution of y and x and we need to find the marginal distribution of x. Now, we get the conditional distribution as 1 upon 1 minus x and y is from x to 1. So, if you remember uniform distribution, this exactly is like uniform distribution. Now, we already have the given value of x equals to 1/2 and we can find the expectation and variance accordingly. So, on the right hand side of the screen, we have the following color codings. White indicating the question hasn't been visited yet. Red indicating the question hasn't been answered yet. Green indicating we have answered the question. Purple indicates that the question hasn't been answered and it has been marked for review. So this will generally happen if we want to take some more time in this question and we want to answer it later. Like we know the answer of the question, but we just need more time in order to solve the question. Last and the most important one, purple with a tick. It simply means that I have answered this question, but I'm not very sure if my answer is right or not. And if time permits, I would like to go back and resolve this question maybe or reconsider this answer. So the major doubt remains whether the question marked for review will get evaluated or not. So if you have answered this question, yes, it will get evaluated. Let's solve this question. We have a joint probability mass function and we have to find probability x equals to 2 given y equals to 2. So conditional distributions are the favorite questions in IIT JAM, GATE. We will need to find the marginal PMF in this case. In order to find the marginal PMF of y's, I will simply sum x's over the possible range. So we have the joint PMF, we have the marginal PMF, we have the given values. We will simply put them in the numerator and denominator. Thank you so much for watching, guys. Stay tuned for next video tomorrow.